Welcome. Let's do the demand assignment number 2 solutions. Ideally this is not really required क्योंकि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो ऑलरेडी हम अपने चैप्टर की वीडियोस में कर चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डन वन असाइनमेंट टू आल्सो नो बट आई जस्ट वांटेड टू टेक अ मोमेंट एंड डू दीज क्वेश्चंस बिकॉज ये इंटरनल्स में बहुत ज़्यादा आते हैं सो वी विल ऑल्सो गो थ्रू द स्टेप्स कि आपको इसमें मेंशन क्या क्या करना है, लिखना कैसे है और आंसर आपको डिपिक्ट कैसे करना है. द फर्स्ट पार्ट इज कि आंसर निकालना कैसे है वो हम कर चुके हैं. सेकेंड पार्ट इज कि उसका डिपिक्शन कैसे होना चाहिए, हाउ शुड यू प्रेजेंट इट इन द एग्जाम्स, है ना, ताकि आपके मार्क्स आए. वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. So simple questions हैं. C has a utility function of u is equal to x into y. Find his demand functions for x and y. Also find the slope of angel curve and demand curve and plot his IOC. Okay. So u is equal to xy, is a Cobb-Douglas function. ठीक है, तो आप लिखोगे it's a Cobb-Douglas function. Because it is a Cobb-Douglas function, we know that the equilibrium will be at tangency. So I'm not telling you something new. I'm just telling you how to represent in the exam. So this is your first point you need to mention. This is your second point you need to mention. Then you will write कि tangency कहाँ पे होती है? Tangency happens at MRS is equal to the price ratio. Right? So you will write MRS is MU1 upon MU2. which is nothing but y by x. So y by x is equal to P1 by P2, which implies that y is equal to P1 by P2 into x. हमारे पास budget line है P1 x1 plus P2 x2 is equal to m. So P1 x plus P2 y. So P2y is P2 into P1 by P2 into x is equal to m. This P2 and P2 gets cancelled. This implies x is equal to m upon 2P1. Similarly, you will calculate y. Y is P1 by P2 into x, which is nothing but m by 2P1, which this gets cancelled, which is m by 2P2. So you will write that the demand function for x and y are, for x it is m by 2p1 and for y it is m by 2p2. ठीक है, अब इसको प्लॉट करने की बारी आई IOC को. तो आपने बोला मेरे ओरिजिन है 0,0, दिस इज माई x एक्सिस गुड x, दिस माई y एक्सिस गुड y. मेरे पास इनिशियली बजट लाइन से AB, इनकम इंक्रीज करी, आई मूव फ्रॉम AB to A1 B1, income further increase करी, I move from A1 B1 to A2 B2. लेकिन before you plot the IC, before plotting the income of a curve, the ICs, what do I need to do? I know that x is equal to m by 2p1. Can I write 2p1 x is equal to m? I can write that. So for the slope of the angel curve, I need m upon del x, which is nothing but 2p1. This is my slope of the angel curve. Now p1 constant है, अगर आपका m change हो रहा है तो p1 constant है. This implies my slope of angel curve is constant. अगर मेरा slope of angel curve constant होता है तो slope of IOC भी constant होता है. अगर slope of IOC constant होता है then I know it's going to be a straight line. ठीक है, it's going to be a straight line. ऑल्सो वाई यू नीड टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी. आपको पता है कि हमारा कॉब-डगलस होमोथेटिक है. से एक होता है कि आपका बेसिक आंसर करना, दूसरा होता है कि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा शो करते हो ना तो एग्जामिनर को भी लगता है हाँ ठीक है इस बच्चे को आता है. सो wherever you know a little extra, don't be hesitant in writing a little extra. Like here for example, they've asked you to draw the IOC. आपको पता है कि हमने होमोथेटिसिटी करा है, आपको पता है कॉब-डगलस इज होमोथेटिक. अगर होमोथेटिक है तो आपको ये भी पता है ना IOC इज अ स्ट्रेट लाइन. तो आप IOC को कर्व क्यों ड्रॉ करोगे? नहीं करोगे ना. आपको IOC को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और ये चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड में चलनी चाहिए. इफ़ आई हैव अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मुझे उसका IOC ड्रॉ करना, मैं कौन सा ड्रॉ करूँगा? स्ट्रेट लाइन. मेरे पास कॉब-डगलस है, मुझे उसका IOC ड्रॉ करना, कौन सा ड्रॉ करूँगी? स्ट्रेट लाइन. ठीक है.
and you can write it because we know it's a homothetic function, because Cobb-Douglas is a homothetic function, इसीलिए इसका जो income of a curve बनेगा वो एक straight line होगा, जो कि आपने यहाँ पे शो भी कर दिया. आप similarly अपना good 2 के लिए भी कर सकते हो. Similarly, you can do it for good 2 also. और अगर वो बोलता आपको कि आप एंजल कर्व भी ड्रॉ करो, तो आप एंजल कर्व भी ड्रॉ कर सकते हो with respect to m x1 and m and x2, which are also going to be straight lines. So, income of a curve is a straight line. The important part here is that income of a curve is a straight line. Now, although the question didn't ask for it, but इसका अगर हम price of a curve बनाते तो कैसे बनाते? AB, AB1, AB2. P1 is falling. Now you know x1 is m by 2p1. Right? Can I write 2p1 x1 is equal to m? Can I write 2p1 or p1 is equal to m upon 2x1? The idea is अब मुझे del p1 upon del x1 निकालना है, तो या तो मैं यहाँ पे निकाल लूँ del x1 upon del p1 और उसको मैं रिवर्स कर दूँ. दिस कम्स आउट टू बी माइनस m upon 2p1 स्क्वायर, विच मीन्स दैट मेरी जो स्लोप है वो क्या है? मेरी स्लोप है 2p1 स्क्वायर अपॉन m विद अ माइनस साइन. दिस इज माई स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व. नाउ m मुझे पता है कांस्टेंट है, p तो कांस्टेंट नहीं है, which means my slope of demand curve is not constant. So now when I have to draw the demand curve with p1 x1, so I know it's a downward sloping curve, but I will not draw a straight line because slope constant नहीं है. मैंने क्या draw करा? मैंने एक curve draw कर दिया. Do you understand? तो मैंने क्या किया? I just took out the slope to understand कि slope constant है कि नहीं है. स्लोप कांस्टेंट नहीं निकली तो मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया. स्लोप कांस्टेंट निकलती तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती. द आइडिया ऑफ डूइंग इट इज दैट यू नाउ नो दैट POC विल बी अ upward sloping line, but what will be the shape of this POC? We don't know. अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो शेप क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी जरूरी है. सो यू हैव टू टेक केयर दैट यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन whenever there is a straight line in the question. Otherwise, if it's a curve, then whatever curve you draw is not important. Do we understand? So this was Cobb-Douglas. Let's do a similar thing for quasi-linear. So for quasi-linear, this is a quasi-linear function, x plus log y. अगेन आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ये फंक्शन क्वाज़ाई लीनियर है. क्योंकि ये फंक्शन क्वाज़ाई लीनियर है इसलिए इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो टेंजेंसी है. टेंजेंसी का मतलब है कि हमारा MRS विल बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो. MRS क्या होता है? mu1 upon mu2, which in this case is 1 upon y, which is y. So this is my demand function of good y. The demand function of good x will be m minus y into p2. This is the amount of money I spend on good 2 na, upon p1, whatever is left for me usko मैं divide करूँगी. So I can write m minus y into p2. So y की जगह can I write p1 by p2? This and this gets cancelled upon p1. So my function for good 1 becomes m minus p1 upon p1. अब इसके लिए You see, पहले वाले के लिए मैंने आपको बोला था निकालो. इसके लिए I will tell you don't take it out. In the sense that you know कि आपके पास income of a curve के लिए you have AB, A1, B1, A2, B2 as your budget lines. I'm saying that you don't take out the slope because you already know that the income of a curve for this will be a vertical straight line after a certain point. After a certain point, it's going to be a vertical straight line. अब ये आपको instinctively याद रहना पड़ेगा. मेरी थोड़ी सी vertical line टेढ़ी बन गई है, but you draw a straight one. Okay? हाँ, slope निकालनी है angel curve की. यहाँ पे आप निकालोगे slope angel curve की. You will say del m by del y. It is 0. There is no change with respect to income because income effect of habit good is 0. इसमें आप निकालना चाहोगे, आप निकाल सकते हो. You can take it out. That's now not really important. What was the important part? कि जैसे हमने Cobb-Douglas के अंदर निकाल के करा, quasi-linear के अंदर you will not take it out. You should automatically, instinctively know what should be the answer. And you should be instinctively be able to plot the income of a curve. Again, what's the extra you can write here? You can say that this is non-homothetic. This is non-homothetic. Why? Because when income doubles,
then what happens? X1 still remains the same. So the extra money is all spent on X2. So X2 is not doubled, but it can increase actually more than double. Miss M likes her consumption just so. She only likes to eat curd with whey and vice versa. मतलब वो कर्ड या तो वे के साथ लेगी, अदरवाइज वो नहीं लेगी. एंड सिमिलरली फॉर वे, she likes 2 units of whey per unit of curd. Find the demand function. So you know it's a perfect complement. But the challenge is कि आपको पहले perfect complement का function find out करना पड़ेगा. Not a challenge at all. हमने पहले किया हुआ है. Let's do it again. So let's say whey is x and curd is y. So then can I say, let's say 1 unit of whey, let's say gives her 1 util of satisfaction. But 2 units of whey खाती है ना वो एक बारी में, तो उसको कितना मिलेगा? 2 utils of satisfaction. This is the same amount of satisfaction that she will get with curd, and only obviously with the combination, which means that when my utility function is minimum of cx comma dy, then the utility that she gets from 1 util of x from 1 unit of x is 1 util, so c is 1. From 1 unit of y is 2 utils, so that's why 2y. Okay, cross check. She will consume at the kink x is equal to 2y, which means she's consuming the ratio of 2 is to 1. That is what we wanted, 2 is to 1, which means this function of ours is correct. ठीक है, एक बार मेरे पास ये आ गया, उसके बाद लाइफ इज इजी ना, क्योंकि इसका डिमांड फंक्शन कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कंजम्पशन विल हैपन इन द रेशियो ऑफ x इज इक्वल टू 2y. वी नो दैट हमारे पास फंक्शन इज p1x प्लस p2y इज इक्वल टू m. Can I write p1x की जगह p12y plus p2y is equal to m, which means y comes out to be m upon 2p1 plus p2 and x comes out to be 2m upon 2p1 plus p2. And now to find out the slopes, what do? I will write it as 2p1 plus p2 the whole into y is equal to m. I have to find out del m by del y to find the angel curve slope. That is 2p1 plus p2 for good 2, and for good 1 it will be 2p1 plus p2 upon 2. Now you know p1 p2 constant है, जब m change हो रहा है तो p1 p2 तो constant है ही ना, which means that you know that your income of a curve will be a straight line. Your income of a curve will be a straight line. So you draw the straight line and then you draw the L-shape ICs. My L-shape ICs are not coming perfectly, but you can actually draw them perfectly. And that's how the assignment has to be solved. Alright. So you can again write in this one that perfect complements are homothetic. So you know that income of a curve will be a straight line. And you've also proven it here by calculating the slope of the angel curve. Alright. And you have to plot the POC. POC plot करना भी आसान है. You just take the 3 budget lines, you draw the L-shaped curves, and since you see POC perfect complement का will also be a straight line. The POC of perfect complement will also be a straight line. Can you guess why? Because the consumption is always at the kinks, and the kink will always lie in a straight line because the ratio of consumption is constant, which is why POC of income of a curve will also be a straight line. Once you draw the straight line, then you can draw your ICs around it. Alright, so this finishes our demand chapter. I will see you in the next one for revealed preference. Thank you.